Assalamu alaikum, everyone. I'm extremely excited to be here amongst such passionate group of individuals, and especially the ones who are interested in hearing about rewards coupled with socio-economic data. So at one hand, we have lunch, because it's almost the time, and at one hand, we have this presentation. So that means these people are really passionate who have given up lunch for this one. Thank you very much. Let me just give you a very brief background about why we are presenting it here. So I was having a discussion with one of my colleagues, and it was regarding an investment model which uses a very comprehensive set of data for the Pakistani market. And based on the data, it evaluates the direction of financial assets, which could be currency, real estate, stock market. And while we were going through that model, somebody just mentioned that, your model takes rewards or people's compensation as the basic ingredient. This has a lot of value for HR people. So why shouldn't we present this to the HR fraternity? So that was a big challenge because the data that is at the back of what I'm going to present to you is huge. And a lot of data doesn't make sense to everyone. But the challenge was how do we make it meaningful and then tell you guys that what exactly is broken with rewards. So a lot of us, we know that a lot of things are broken with rewards, but what we know is just the tip of the iceberg. So during this presentation, we'll take you through and tell you that what exactly is wrong at the deeper level and what are the ways we can try to fix it. So with this, let's start with the session. Thank you very much. We'll be talking about 4 main things. The first one is very important, although it might not appear directly connected with the topic, but it will help you understand the data analytics that we have at a much deeper level. So we'll be looking at the techniques to identify data pattern changes. Then we'll talk about what are the rewards data patterns. And then what exactly is a fundamental change that has happened in the rewards arena. And then lastly, we'll talk about the way forward. So here I have a question. In your childhood, how many of you used to draw pictures in clouds? You used to, identify pictures in clouds. Just a raise of hands. A lot of people. How many of you do that now? A very, very, very few. Why not? Because we're not interested or we don't get time. Same is the issue with data. If you look at it, you find a lot of patterns. And if you don't look at it, you miss the patterns. Like one of our colleagues, Homera, rightly pointed out that when you look at the data, you see a lot of stories. So I'm going to share a short story with you, and it is related to something that's drawn at that edge. Does anyone recognize what's that? What is it? Hand sanitizer. It is something that has always been there. We just learned about it 3 years ago during COVID. So that's a story regarding COVID, and I'm telling you this story because it has a very, very, very strong background attached to it. Imagine that I'm talking about 2019 when we did not know anything about COVID. So we used a data technique to identify that the COVID is coming. 2019, October, I was working for HubCo at that time, and I met a few colleagues at HubCo who were supposed to go to China. And they were supposed to be there for about a month or so. And they returned after 6, 7 days. When I met them in office, I asked them, you were supposed to be in China, what are you doing in Pakistan? So they said, China में कोई वायरस आया हुआ है जिसकी वजह से वो ऑफिस जहाँ पे हमने विजिट करना था, वो विसिनिटी को उन्होंने शट डाउन कर दिया है. So for a moment I thought कि probably आपने चाइना में कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, and you're telling us कि कोई वायरस आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? It's impossible. I just went on Google और मैंने सर्च किया. जब मैंने सर्च किया तो समझ में आया कि there is something. उसका अभी कोई नाम नहीं है. It's October 2019. सही है? उसका नाम नहीं है. उसकी अभी कोई खास क्लासिफिकेशन नहीं हुई कि how dangerous is it. People don't know much about it. But एक एरिया चाइना का शट डाउन कर दिया गया है. सब जब गूगल किया तो समझ में आया कि यस उसका एक वायरस है वहाँ पे और वो CDC की वेबसाइट पे ले गया. Now this is extremely important when I'm mentioning the CDC part because this is the insight that told us that we are going to be hit hard.
सो CDC की वेबसाइट पे लिखा हुआ कि देयर इज अ प्रोटोकॉल कि अगर चाइना में कोई भी नॉन सीजनल बीमारी 3 से ज़्यादा डिफरेंट रेजिडेंशियल या ऑफिस से रिपोर्ट होगी तो उसको CDC में रजिस्टर करना है। एक में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई केमिकल घर में इस्तेमाल किया और सब बीमार हो गए, 3 डिफरेंट घरों से। सो उसमें लिखा हुआ कि इस डेट पे 3 डिफरेंट घरों से ये डिजीज़ के जो भी लोग थे जो बेचारे वी वर हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वो रिपोर्ट हो गए। नेक्स्ट डे का लिखा हुआ कि नेक्स्ट डे वो 7 या 11 हो गए, नेक्स्ट डे का लिखा हुआ एंड दैट वाज ग्रोइंग एट अ वेरी एक्सपोनेंशियल रेट। उसके नीचे लिखा हुआ कि इस वायरस का अटैक रेट है 5.6 अब तक का जो डिटरमिन्ड है। सो आई एम नॉट अ बायो इंजीनियर और अ वायरोलॉजिस्ट, मुझे नहीं पता कि अटैक रेट क्या होता है, सो आई गूगल्ड इट, बट देयर इज अ वे आई कैन फिगर आउट कि ये अटैक रेट क्या है, हाउ सीरियस इज इट। और वो तरीका है इफ आई कैन अंडरस्टैंड कोई ऐसी चीज जिसका अटैक रेट मुझे पता है। सो आई टाइप्ड इन कि फ्लू का अटैक रेट क्या है। सो कोविड का अटैक रेट था 5.6, फ्लू का अटैक रेट था 1.2। सो इमीडिएटली यू हैव अ कनेक्शन कि अगर फ्लू पूरी दुनिया में फैल जाता है 1.2 के अटैक रेट से तो 5.6 तो आएगा ही आएगा। फिर उसका डेथ रेट चेक किया तो वो था 8%। तो समझ में आई कि दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो आई इमीडिएटली रन अप टू माय बॉस और मैंने उनको कहा कि आई वर्कड आउट सम नंबर्स, कुछ एडिशनल नंबर्स क्रंच किया और उनको कहा कि इट लुक्स लाइक कि समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी शट डाउन। ही इज अ डेटा एनालिटिक्स गाय, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा यू मेकिंग सेंस, सो व्हाट डू वी डू। सो हमने किया ये कि अपनी मैनकॉम को इनवाइट किया एक प्रेजेंटेशन में और उनको वो सारा डेटा दिखाया और उनको कहा कि ये होने लगे एंड वी हैव मेड अ टेंटेटिव प्लान। और वो प्लान क्या है कि हम वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी लेके आए हैं इस मीटिंग में अप्रूव करवाने के लिए, हम ई लर्निंग पे कुछ बजट लेके आए हैं जो हमने स्पेंड करना है, हम अपने जो ERP सॉफ्टवेयर्स हैं collaboration tools such as Office 365 इसके लाइसेंसेस एक्सटेंड करने लगे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस। October 2019 nobody knows about COVID। इमेजिन कि रिस्पॉन्स क्या आया होगा। द रिस्पॉन्स वाज कि यार ये क्या खाया है तुमने, ये हमें भी चाहिए। एंड दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट फूड। It was a terrible response, terrible response, and they thought कि we were just, कुछ हो गया है। One of the guys said कि Talha, maybe you should go, take a break, एक हफ्ते बाद वापस ऑफिस आओ, you need a break। हम लोग मीटिंग से बाहर आए, so I discussed with my boss कि क्या करना चाहिए। So we said opportunity तो है, अगर इतना बड़ा मसला होने लगे, so let's sell all the stocks we own। We were convinced कि COVID आएगा, and we were damn convinced। So we sold all our stocks when the market was very high, and then we started preparations। So हमने वेंडर से बात की कि हमें ये सर्विसेज चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स लिखवाए, PRs रेज करना शुरू की। अभी तक हमें अप्रूवल नहीं मिला है, बट वी वर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर दैट। और CEO उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा तलहा जस्ट मेक श्योर दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमने उस लाइन को यूज़ किया एंड वी वेंट टू द फ्लोर और हमने कहा कि सब लोग N95 मास्क पहन लो। सो नाउ वी आर स्टैंडिंग इन नवंबर, एंड ऑफ नवंबर सबको N95 मास्क पहना दिए व्हेन नोबडी वाज वेयरिंग मास्क, एंड दैट बिकेम अ प्रॉब्लम। हमने क्रॉकरी बंद करा दी, सब कुछ बंद करा दिया, जस्ट ऑन द बेसिस कि हमने एक नंबर देखा विच कन्विंस्ड अस के देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट वाज 1.2 वर्सेस 5.6। I'll use that number आगे भी to explain you कि what's gone wrong with the rewards। अब हमने प्रिकॉशंस भी लगा दी ऑफिस में, इवेंचुअली कोविड नहीं आया। अब हम रोज ऑफिस आए और कहीं कोविड नहीं आ रहा। हमारे ऑफिस में खान के डॉक्टर्स आते हैं, सो द CEO सेड कि यार एक काम करो, उनसे पूछ लो कि क्या हुआ है। सो मैंने अपनी टीम में से किसी को भेजा कि आस्क द डॉक्टर्स हु आर द एक्सपर्ट्स कि क्या है सिचुएशन। सो द डॉक्टर्स सेड कि यार ये जो इतने दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास पेपर मग्स आ रही हैं और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, दैट वाज द प्रॉब्लम। आप पागल हो गए, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो टीम मेंबर्स मेरे पास आए और बड़े परेशान, उन्होंने कहा एक महीने से हम लोगों को प्रिकॉशंस पे तंग कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स तो कह रहे हैं आएगा ही नहीं। तो माय बॉस कॉल्ड मी, उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स। आई सेड दे आर टेलिंग अस द सिचुएशन इज वर्स देन वी कैन इमेजिन। उसके बाद खान के एक वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हम एक पब्लिक स्टेटमेंट निकाल रहे हैं जो कि फेसबुक, यूट्यूब लाइव सब पे आएगी, और जिसको भी कोई कंसर्न्स हैं अबाउट दिस डिजीज वो वीडियो देख ले। सो वी वॉच दैट वीडियो। वो CEO ने हमें रिकमेंड की कि यार ये देखनी है। जब हमने वो वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो CEO ने बुलाया, उन्होंने कहा वो क्या कह रहे हैं वायरोलॉजिस्ट। हमने कहा वो कह रहे हैं कि द सिचुएशन इज वर्स दैट यू कैन इमेजिन। 2 घंटे बाद CEO ने ये वीडियो देख ली। सो माय बॉस कॉल्ड मी और उन्होंने कहा तलहा गलती मेरी है कि चाइना के गाँव में लोगों को खांसी आ रही है और मैंने
क्लिफ्टन में अपने हेड ऑफिस में लोगों को N95 मास्क पहना दिए हैं। सो वी सेड कि अब क्या किया जाए, मैं प्रिकॉशंस हटा देता हूँ। तो उन्होंने कहा पहले रेपुटेशनल डैमेज किया, फिर स्टॉक्स बिकवा के फाइनेंशियल डैमेज किया, और अब तुम उसको इंडोर्स कर दोगे ईमेल करके कि वी वर रॉन्ग फॉर द लास्ट 1 मंथ। सो गिव मी टाइम, लेट मी थिंक के रेपुटेशन कैसे बचानी है और उसमें से सेव एग्जिट कैसे करना है। ऑल्दो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट लकीली फ्राइडे नाइट को उसी दिन हार्बर फ्रंट में एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है जिसमें कोविड का फर्स्ट केस आइडेंटिफाई हुआ, एंड दे शट डाउन देयर ऑफिस। सो फर्स्ट टाइम इन माय करियर इन हब को संडे को मुझे बुलाया गया कि यार बताओ तुमने वो क्या प्रेजेंट किया था। हमने वो प्रेजेंट किया, उसका अप्रूवल मिला, एंड ड्यूरिंग एंटायर कोविड टेन्योर, although we were an essential company working at full workforce, there was 0 COVID case at workplace. अच्छा, अब अगर मैं इसको यूज करूं एज अ टेक्निक कि हाउ डू यू फाइंड पैटर्न्स और आंसर्स और इनसाइट्स इनटू डेटा, सो वन पर्टिकुलर वेरी इजी वे इज you need to think in terms of ratios, in terms of percentages, multipliers, proportions. अभी यहाँ पे फैसल बैठे हुए थे बैंक ऑफ से, he used a very interesting term, cost to income ratio. I've never seen the HR fraternity using that term, लेकिन that's one of the most critical elements that can help you understand कि rewards के साथ क्या problem आ रहा है. So I'm going to step into that, लेकिन इस पे जाने से पहले मैं एक आपको practice HR की बताना चाहता हूँ, which all of you know कि ये practice क्या है. So how do we benchmark? So ये एक benchmarking grid बना हुआ है, it's half of it, अभी मैं इसको open करूँगा. So on left hand side जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, that's a company name, that's an actual company name. For confidentiality मैंने उसका date, उसका नाम हटा दिया. जो ऊपर horizontal layer चल रही है उसमें भी 1, 2, 3, 4 up to 12 लिखा हुआ है. So 1 is the company name, 2 is the company name, 3 is the company name, all these numbers have an actual company behind them. और जो green boxes हैं वो ये represent कर रहे हैं कि जो company 1 है वो कंपनी 2 के साथ अपनी कॉम्पोजिशन को बेंचमार्क कर सकती है, करती है, 3 के साथ करती है, 4 के साथ करती है, 5 के साथ नहीं करती, 6 के साथ करती है, 7 के साथ करती है, 8 के साथ नहीं करती, 9 के साथ, 10 के साथ, 11 के साथ. सही है. अभी मैं बाकी सारी कंपनीज खोलूंगा विच ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया आर टॉप 12 कंपनीज ऑफ पाकिस्तान. लेकिन खोलने से पहले मैं आपको एक एनोलॉजी देना चाहता हूँ. Japanese samurais back in the years were really famous for their mastery in sword fighting. They were considered as the best fighters ever. लेकिन जब invasion हुई थी तो वो बाहर से हुई थी. They were living on an island, sword fighting में best थे, invasion बाहर से हुई और वो guns से हुई थी. Swords का कोई काम नहीं था. We'll use this analogy and we'll try to evaluate कि यहाँ पे क्या problem है. So top 12 companies of Pakistan on a certain criteria are all looking at each other. What are you paying? What are you paying? What are you paying? And we'll use an average and we'll pay the same. Now this presents a huge problem. वो problem ये है कि अगर outside context change हो गया है या कोई fundamental change हो गया जो किसी और ने pick नहीं किया, तो आप भी pick नहीं करेंगे because all of us are looking at each other. So we need to find out कि is there any fundamental change? जैसे हमने COVID के बारे में बात की कि fundamental change था in R naught. वो fundamental change क्या है? So I'm going to take you through that fundamental change. उस change पे जाने से पहले there's a question कि rewards क्या है? So rewards is a economic transaction जो employees की employers के साथ होती है for the services that they deliver. अब अगर मैं इस economic transaction को कहूँ कि ये क्यों करते हैं? Any guess? मतलब one can say यार मुझे नहीं ये economic transaction करनी. Why do people engage into employment with an employer? Because they have to earn money and they have to take care of their well-being. So the term well-being, इसको मैं 2 parts में divide करूँगा. एक है psychological well-being और एक है financial well-being. Now all of the HR practices that are dominant, वो बात करती हैं psychological well-being की. We have anti-harassment policy, we have respect at workplace, we have engagement surveys, dipstick surveys, career growth opportunities, how we can make our people, feel better at the workplace. Financial well-being एक function के पास है जिसको हम कहते हैं rewards, जिसको हम कहते हैं compensation. This function was never supposed to be an HR function क्योंकि pricing का function है. So we have people from let's say Honda sitting here. आप HR के professional से कहें कि इस गाड़ी की मुझे pricing कर दो. It would be very difficult for that professional to price it.
लेकिन हमने रिवॉर्ड्स दे दिया, और रिवॉर्ड्स के लिए प्राइसिंग का प्रैक्टिस क्या शुरू हुई? द प्राइसिंग प्रैक्टिस वो ये थी कि हम एक दूसरे को देखना शुरू हो गए कि जो तुम दोगे, जो तुम दोगे, जो तुम दोगे, मैं उसी का एवरेज निकाल के दे दूंगा. एंड दैट्स वेयर द फंडामेंटल बिहाइंड रिवॉर्ड्स दे वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन. और वो प्रोपोर्शंस क्योंकि आउट हो गए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग फाइनेंशियल वेलबींग की वजह से एट्रिशन और प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, डिसैटिस्फैक्शन देख रहे हैं, रिजेंटमेंट देख रहे हैं. अगर मैं फाइनेंशियल वेलबींग को फर्दर ब्रेक करूं, तो इसके दो पार्ट्स हैं. एक है शॉर्ट टर्म एब्लिगेशंस विच आर मंथली ऑब्लिगेशंस, जो इमीडिएट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, और दूसरी हैं लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस विच आर योर अल्टीमेट गोल्स. सो अगर लाइफस्टाइल ऑब्लिगेशंस में कोई फंडामेंटल चेंज होगा, हाउ वुड यू नो? आपको इन्फ्लेशन का डेटा नजर आ जाएगा, क्योंकि वो सपोर्ट करता है आपके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को. योर एवरीडे एक्सपेंसेस, दूध लेना है, अंडे लेने हैं, पैम्पर्स लेने हैं, बिजली का बिल देना है. बिजली महंगी होती है, इन्फ्लेशन के नंबर्स में रिप्रेजेंट हो जाता है. बट व्हाट अबाउट द अल्टीमेट गोल्स? अल्टीमेट गोल्स हैं वे यू से कि मुझे गाड़ी लेनी है लॉन्ग टर्म, मुझे बच्चों की एजुकेशन फंड करनी है, आई हैव टू अफोर्ड एन हाउसिंग, मुझे अपनी हाउसिंग इंश्योर करनी है. ये क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होते इन्फ्लेशन के अंदर? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 8% थी, सो गाड़ी की प्राइस इंक्रीज ऑलमोस्ट 100% थी. इसको देखने के लिए इन्फ्लेशन का मेथड यूज नहीं हो सकता, और क्योंकि हमने काफी अरसे से इन्फ्लेशन का मेथड यूज नहीं किया, इसलिए देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट वी हैव एट हैंड, जहां पे अल्टीमेट गोल्स लोगों के कॉम्प्रोमाइज हो गए. सो आई विल टेल यू कि अल्टीमेट गोल्स कैसे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं. उसके लिए हमें समझना पड़ेगा द नेचुरल डिजाइन ऑफ अ रिवॉर्ड सिस्टम. सो एक नेचुरल ऑर्गेनिक डिजाइन क्या होता है रिवॉर्ड सिस्टम का, कि योर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड योर लॉन्ग टर्म गोल्स दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ योर रिवॉर्ड्स. व्हेन आई से स्कोप, एक बंदे के पास कितने साल होते हैं अपने करियर में इन विच ही कैन अर्न. Assuming somebody starts his career at the age of 25, he would have 35 years till the age of retirement. So the natural design, the organic design says that all your short-term obligations and your long-term obligation, you should be able to achieve them within those 35 years. Now, when I say long-term and short-term obligations, of course, I mean reasonable goals. I'm not saying that you should be able to buy a jet for yourself. Reasonable goals, सही है? And when you say reasonability in the natural system, in the natural design of the rewards, it precisely says that what social strata you belong to, और उसमें what are the financial values of your ultimate goals. जो लाइफस्टाइल है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस है वो सेविंग से ड्राइव होती हैं. यू सेव टू अचीव योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू सम socio-economic data, and the question is how much are we able to save. So according to estimations, so when neighboring countries भी ले लिए, so that we know कि हमारे आसपास भी क्या हो रहा है. So ये जो green bar है, that is an average for Pakistan. So our saving rate is 5%. The next is India, 19%, and then it is Bangladesh, 22%. So this graph precisely tells you that in the year 2023, a Pakistani earning 100 rupee would save 5 rupees, an Indian earning 100 rupees would save 19 rupees, and a Bangladeshi guy earning 100 rupees would save 22. Now there's a problem. Everything that we use, mostly we are a net import country. So I use the same phones that an Indian or a Bengali would use. But the amount of money I have to buy that phone is only at the rate of 5%. Now there's an even bigger problem. The per capita income and the inflation. Pakistan ki per capita income $1,500, $1,500. Then we have India at 2,667, and then Bangladesh at 2,482. So the even bigger problem is that although I'm saving 5%, that too of a very, very, very low level of per capita income. And then there's another problem. The 5% of a very low value that I'm saving is being devalued by 28.2% every year. That's a very bad situation to be in.
because all of us are working to meet our ultimate lifestyle goals, reasonable life goals. Till here, it's not that scary if you believe this is scary. The worst part comes on top of it, which is the cost of meeting your financial goals. Okay, so I asked a question, I conducted a research for that particular investment model. The basis of the investment model was to identify that, where people would spend their savings. So I had to know what are the most important priorities of people. So number one priority in Pakistan is buying a house. So currently we are a population of 22 crore, 220 or 230 million, and the housing unit shortage is 19 million. So 19 million housing units we don't have. That is the reason why government came up with Sasta Ghar or Mera Pakistan programs to support us or support the citizens of Pakistan in fulfilling this need. So since primary need is house, the secondary need is car, then it's kids' education and so on, I'll show you the numbers regarding these. So this data is from year 2022. Oh, 2002. 2002, this is telling you okay, number of years required, number of years of savings required to buy a house. In year 2002, it was 20 years. This is house, this is car. 3 years. Whatever you save, 3 years of saving to buy a car. And then you would have 12 years of savings at your own will. You can spend it at your own will. How do you think the data would look like in 2022? For a house, in 2022, you would need 27 years of saving. 4 years for car, and still you would be left with 4 years. उसका कुछ भी कर सकते हैं. अच्छा, when I say house, so house में क्या किया कि हर income level पे, हर social strata पे, उसके respective housing को देखा गया है. So it's not like कि एक flat घर की कीमत लेके उसको multiply किया हुआ है, हर level पे उसको देखा गया है. So these are averages. ये higher levels पे थोड़ी सी कम होती हैं, junior levels पे बहुत ज़्यादा skewed होती हैं, ये 20 years या 27 years से भी ज़्यादा होंगी. अच्छा, just to give you a context ताकि आपको ये numbers और clarity से समझ में आ जाए, because we are yet to look at the 2023 data. So for example, 4 लिखा हुआ है, 2022 में गाड़ी लेने के लिए आपको 4 साल की saving चाहिए. By the way, most of the rewards professionals who did not know कि गाड़ी को 5 साल या 4 साल पे क्यों monetize करते हैं, that's the natural design of the reward system. A person who saves 100,000 rupees a month, 1 लाख रुपए हर महीने सेव करता है, would be saving 1.2 million in a year, 12 लाख रुपए. और 4 साल में वो बनेंगे 4.8 million, 48 lakh rupees. Now you can imagine जो बंदा 1 लाख रुपए सेव करता है, and the car that he drives, in 2022, he would be driving a car worth 4 to 5 million rupees. That's how this data fits in. 2023 was a beautiful year. Just for the house, you would require 45 years. This might seem improbable. I'll explain you how. The car has gone to 12 years. So cumulative, this is over 50 years. 50 years to मेरी serviceable life ही नहीं है. So now I am stuck with a problem that no matter what, I'm working with the best employer brand in Pakistan, or let's say the world. If I cannot buy a house that is an average house in my social strata, if I cannot buy a house in 35 years, what am I working for? I don't want to die or retire in a rented house. Why am I working? Or am I in the right career? That's the question. Am I in the right profession? The car has gone to 12 years. Now, you must be thinking कि गाड़ी की price तो double हो गई है. So that should be 8. 8 की जगह 12 years पे क्यों चला गया? Because उसी social strata के taxes भी बढ़ गए और expenses इतने ज़्यादा बढ़ गए कि savings drop हो गई. Electricity double हो गई, बहुत सारी चीज़ें double हो गई, savings squeeze हो गई, and the number has gone to 12.
So अगर 12 साल मुझे एक गाड़ी लेने के लिए चाहिए, 45 years for a house, I am seriously concerned about the reward systems in this country. With the prices of phones going up, I was referring to the data कि cost of ownership of phone क्या है in Pakistan. Assuming that you change your phone every 2 years, the cost of ownership of phone, lifelong ownership of phone, is 3.5 years. Now imagine कि अभी मैं इसमें phone factor in नहीं कर रहा हूँ. So within 35 years मैं क्या कर सकता हूँ? The only option I have is कि मैं अपने सारे के सारे life goals compromise कर दूँ, उनको divide by 2 कर दूँ. I'll buy a smaller house at a relatively cheaper area. I'll buy a smaller car, जो कि शायद 4 साल में आ सके तभी हो सकता है. So this compromise is a problem for our employees. They don't know the numbers, but they feel it. And that is why when you tell them that you're working for one of the best employer brands in Pakistan, why are you leaving for such a second-tier employer brand? They tell you because वो पैसे अच्छे दे रहे हैं. And then you say that this company is going to offer you a lot more. But that offering is restricted. Do you get the point? Achha, this was never the problem before. The compensation systems that we inherited from the MNCs in the past were protecting our employees for this. How? A lot of companies used to say कि अगर 3 साल काम करेंगे तो house building loan मिल जाएगा. So house building loan मिलता है, whatever happens with inflation, your price is locked, and the economic shocks don't matter. But now, a lot of companies proudly announced that we have reverted back. We have taken back no more house loan policies, no more in-kind vehicles or automobiles. We'll pay you monetize allowance. So by design, we said we are introducing disposability. And when we introduced disposability, the workforce became disposable. You're seeing the highest attrition levels in the country. That was because we introduced such measures in our reward practices. At times we blame it to millennials that there's a problem with millennials, they don't stick longer. Because if they stick, they would never be able to achieve their financial goals. That's why the day they enter your organization, they know this is a parking spot for something bigger that I have to achieve, which might not be here. So now I'm going to share a few things about how businesses can overcome this issue. But for that, we need to look at how the talent economics fit into the business economics. For that, I've made a 2x2 matrix. On the left-hand vertical side, there's business affordability. So there are businesses who have a lot of affordability, margins are huge. They can afford to pay whatever they want to pay. Then there are businesses which have low affordability. Increasing the cost slightly can be really, really, really problematic. And then on the horizontal axis, we have talent criticality. Now, talent criticality means that high talent criticality means that if your people leave, that's a huge problem for you. And low talent criticality means people don't matter. They're just another peg in the machine. They can just come and go. It doesn't matter. So when you look at a low talent criticality business with high affordability, that means increasing the cost doesn't impact the bottom line. Variation in talent quality doesn't affect the business sustainability. When you look at low talent criticality and low business affordability, increasing the cost significantly affects the bottom line. Variation in talent quality doesn't affect business sustainability. And then you have high talent criticality and high affordability. Increasing the cost doesn't impact the bottom line. Variation in talent quality significantly affects the business sustainability. And then everything is wrong in this quadrant. You don't have money, but people are extremely important. So, by the way, having a low affordability business doesn't mean the business is bad. There are businesses who are huge just because they produce a lot of volume, business volume. Their margin is low. So now, what do we do there, where the business affordability is high, but talent criticality is low? You want to stay competitive.
You want to act like Japanese samurais. You look at what others are doing, because if you don't stay competitive, your other costs will increase. Attrition will increase. Attrition की वजह से HR का headcount बढ़ाना पड़ेगा, recruitment का headcount बढ़ाएंगे तो HR operations का बढ़ेगा, HR operations का बढ़ेगा तो finance वाले कहेंगे clearance करनी होती है, settlement करनी होती है, and there would be a lot of disturbance in the organization. So what do? You just stay competitive. Not because people really matter, but because you need stability as well. What do you do here? Where business affordability is low and talent criticality is also low. You stay extremely prudent. You try to pay a minimum, but you invest in people who can sustain your profitability and also ensure that they can increase it. So you don't look at these people as normal employees, you look at them as an investment. Now, business affordability is high, talent criticality is high. No matter what you do, you have to make sure that you protect their ultimate financial goals. I'll give you an example. There's an organization which has 0 attrition rate, offers you the most difficult job, there's a chance of death, lowest pays, but still people stick to this organization for their life. Anyone knows which organization is that? Government sector, army. Why? Because the ultimate financial well-being is protected. At the end of the service, you get a house. So we have examples. And then talent criticality is high, the affordability is low. You offer LTIs, stock options, like Michael pointed out, stock options is the way. Most of the tech companies in Pakistan have these programs. So I worked for Confis, a Lahore-based software company. 30%, a little less than 30% of the company is owned by employees in the form of stock options. Just imagine 30% of the company is owned by employees. So affordability is low. But when you become a partner in the company, you become a partner in growth as well. So with this, I'm just going to wrap up the session. If you have any questions, I'll be available here or after the session. I hope that together as an HR fraternity, we are able to address this fundamental change and do something about it. Thank you very much. Thank you.